Dear student, today we will take class 1, subject EVS, chapter 3, Animals World. In this chapter, we study about animals that live on land, water and insects, animals that fly in air and animals that live both on land and in water, and also study about reptiles. Now start the chapter. We see many animals around us. They are of different shapes and size. Animals like giraffe, elephant, rhinoceros, kangaroo, bears and lions are big animals. And insects like bees and butterfly are very small animals. It means हमारे चारों तरफ कई तरह के एनिमल्स प्रेजेंट हैं और उनके डिफरेंट टाइप्स के शेप होते हैं, साइज होते हैं, लाइक जिराफ, एलिफेंट, राइनासोर्स, कंगारू, बियर्स, लॉयंस आर बिग एनिमल्स. ये सब एनिमल्स क्या हैं? बिग एनिमल्स हैं, बड़े एनिमल्स हैं. एंड लाइक इंसेक्ट्स, बीज एंड बटरफ्लाइज आर वेरी स्मॉल एनिमल्स. कुछ बटरफ्लाइज होते हैं, बीज होते हैं, वो क्या होते हैं? वेरी स्मॉल, बहुत छोटे एनिमल्स होते हैं. Now we are going to study about animals that live on land. Some animals live on land. They either live with us in our homes or live in forest. It means forest is a place that has a lots of tree and other plants. Such animals like tigers, bear, deer, snakes, gorilla, leopard and animals live in forest and move about freely. And some animals such as deer and elephant take shelter under trees. And tiger and bears sometimes take shelter in caves. And some animals such as ground squirrels and moles dig burrow in the ground to live in. And some animals like lion, giraffe, ostrich and zebras live in grassland. You know, elephant can live both in forest and in grassland. And some animals live in desert places. Desert is a place which is sandy, receives very little rain and has very few plants. Desert can also be very hot. Some animals like camel, snake and lizard live in the deserts. And some animals that live in very cold places. Certain places are very cold and have very few plants. The ground is usually covered with snow. Some animals that live in cold places are polar bears and Arctic foxes, etc. And some animals that live in our house, like cat, dog, etc. They call pet animals, and cow, buffaloes, goat, etc. They are farm animals. All animals that live in forest, grassland, desert places, cold places, and in our homes, they all live on land. Now next topic is domestic animal. Animals that help us in our work or give food are called domestic animal. We keep them near our homes or farms. Some domestic animals give us food and other useful things. Sheep, cow, goat, horse, dogs are domestic animals. It means animals that are tamed and kept by us for different uses are called domestic animal. Means ऐसे एनिमल जिनको हम अपने घरों में रखते हैं, पालते हैं अपने डिफरेंट यूजेस के लिए, उस ऐसे एनिमल्स को हम डोमेस्टिक एनिमल कहते हैं. लाइक काऊ, गोट्स, डक, hen, cat, dogs are domestic animals. Some domestic animals help us in many ways. We get food, fibers, leather and many other useful things from them. Some domestic animals are used for work and some of them are kept as pets. Means कुछ domestic animals हमें बहुत हेल्प करते हैं, हमें फूड देते हैं, फाइबर्स देते हैं, लेदर देते हैं और बहुत सी यूज़फुल थिंग्स देते हैं. और कुछ डोमेस्टिक एनिमल्स को हम अपने घरों में पालते हैं पेट्स एनिमल की तरह, लाइक डॉग, कैट, पैरट्स एक्सेट्रा. You know how we get milk?
Let me tell you how we get milk. We get milk from animals such as cow, buffalo, goats and camel. The animals from whom we get milk are called milk animal. Means कुछ डोमेस्टिक एनिमल्स जैसे कि काऊ, बफेलो, गोट, कैमल्स, ऐसे एनिमल से हमें मिल्क मिलता है और जिस डोमेस्टिक एनिमल से हमें मिल्क मिलता है उसे हम मिल्च एनिमल कहते हैं. MILCH मिल्च एनिमल. We get eggs from birds such as hen, ducks, geese, etc. And we get meat from domestic animals such as goat, fish, chicken, duck and sheep, etc. And some animal give us wool. Wool is used to make woolens and blankets that keep us warm in cold weather. And some animals to help us move from one place to another place and also to carry heavy loads. Such animals are called work animals. Animals like horses, donkey, camel, yak and oxen are work animals. Work animal also help in travel. Next topic is wild animal. Animal that live in forest are called wild animal. Lion, tiger, wolf, bear, fox, jackal, elephant, langur, zebra, hippopotamus are wild animal. It means animals that are not tamed or domesticated and live on their own are called wild animals. They live in natural surroundings. Some wild animals such as lion, bear, tiger, zebra, elephants are big and strong wild animals, and some wild animals such as foxes, deer and squirrels are small wild animals. Wild animals live in different natural surroundings such as forest, grassland, desert and in water also. You know, the African elephant is the biggest animal on land, but the blue whale is the biggest animal on the earth. It means अफ्रीकन एलिफेंट जो है वो लैंड पे रहने वाले जितने भी एनिमल है उन सबसे बड़ा है, बट ब्लू व्हेल जो एनिमल है वो पूरे अर्थ पे रहने वाले जितने एनिमल है उन सबसे बड़ा ब्लू व्हेल एनिमल्स है. नेक्स्ट टॉपिक इज एनिमल दैट लिव इन वाटर. सम एनिमल लिव इन पाउंड, रिवर और सी. Animals that live in water are called aquatic animal. It means कुछ ऐसे एनिमल हैं जो पाउंड, रिवर और सी में रहते हैं, समुद्र में रहते हैं. सी मीन्स समुद्र में रहते हैं. ऐसे एनिमल को हम एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं. लाइक व्हेल, फिश, ऑक्टोपस, शार्क आर एक्वेटिक एनिमल. नेक्स्ट, insects and animals that fly in air. Insects are very small animal. All insects have 6 legs. Most of the insects have wings. Some common insects are ant, mosquito, cockroach, beetle, grasshopper, housefly, bedbug, etc. Next topic is insects and animals that fly in air. Insects are very small. मीन्स इंसेक्ट्स जो होते हैं, इंसेक्ट्स मीन्स कीड़े, वो जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं, बहुत वेरी स्मॉल एनिमल होते हैं. ऑल इंसेक्ट्स हैव 6 लेग. जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं उनके 6 लेग होते हैं. मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स हैव विंग्स. अधिकतर इंसेक्ट्स के विंग्स होते हैं, पंख होते हैं. सम कॉमन इंसेक्ट्स आर ant, mosquito, cockroach, beetle, grasshopper, housefly, bedbug, etc. Some insects are useful to us. कुछ ऐसे भी इंसेक्ट्स हैं जो हमारे लिए यूजफुल होते हैं. लाइक silkworm, honeybee are useful to us because honeybees make honey and store it in their beehive. We collect honey from beehives. And silkworm insects give silk fibers. Silk is used to make
cloths such as sari and ties. Birds are also animals. They fly in the air. Birds have wings and feathers that help them to fly. It means birds भी animals में ही आते हैं, but वो air में उड़ सकते हैं, fly कर सकते हैं. उनके पास विंग्स होता है, फेदर होता है जो हेल्प करता है एयर में फ्लाई करने के लिए, उड़ने में हेल्प करता है. बर्ड्स हैव 2 legs which help them to walk. बर्ड्स के पास 2 लेग होते हैं जो उन्हें हेल्प करते हैं वॉक करने में, चलने में हेल्प करते हैं. बर्ड्स ईट विद देयर बीक्स. बर्ड ईट करता है बीक के थ्रू. बीक मीन्स बर्ड्स के जो चोंच होते हैं उन्हें हम बीक कहते हैं. वो अपनी बीक से ईट करते हैं. दे डू नॉट हैव टीथ. बर्ड्स के पास टीथ नहीं होते हैं. मोस्ट ऑफ द बर्ड लिव ऑन ट्रीज. जितने भी बर्ड्स होते हैं अधिकतर बर्ड्स ट्री पर ही लिव करते हैं, ट्री पर ही रहते हैं. सम कॉमन बर्ड्स आर स्पैरो, पैरट, क्रो, पिजन, owl, duck, eagle, ostrich, etc. Next topic is animals that live both on land and in water. Some animals like frog, crocodile, crab and turtle can live both on land and in water. It means कुछ animals ऐसे होते हैं जो land पर भी रह सकते हैं और water में भी रह सकते हैं. Like crocodile, crab, turtle and frog are live in both land and in water. Next, reptiles. Animals which have skulls or hard cells on their body are called reptiles. They crawl on the earth. It means ऐसे animals जिनकी बॉडी पर हार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, स्कल प्रेजेंट होते हैं, ऐसे एनिमल्स को हम रेप्टाइल्स कहते हैं. रेप्टाइल्स क्रॉल करते हैं, रेंगते हैं. स्नेक, लिजर्ड, टर्टवाइज आर सम एग्जाम्पल ऑफ रेप्टाइल्स. You know, snakes never close their eyes as they do not have eyelids. It means snakes अपनी आंखें कभी नहीं बंद करते हैं क्योंकि उनके पास eyelids प्रेजेंट नहीं होते हैं. Now chapter is completed. Thank you.